कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। पार्वती उवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो प्रब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेत् यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशस्य दात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यं मातुलं लभेत् येन हि तद्वद। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्या सर्वकामप्रसादकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणम् उत्तमं शत्रुसङ्घाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिंश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। ॐ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवऋषि अनुष्टप छन्द श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थ जपे विनियोगः। ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालिघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदा च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं क्षौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन विदारयेत्। श्रीह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचिनी ह्रूं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विधिवशः सुरेश्वरी
घोररूपा चण्डमुण्ड विनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरे अनावृतस्तनी। मम शत्रुन् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्दी भिन्दी छिन्दी छिन्दी उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीये शत्रुन् समर्पयामि स्वाहा। ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मदं मदं मोहय मोहय हर हर मम रिपुन् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छं क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षौं क्षः स्वाहा। तत्कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः। वैरिणी प्रलयं यान्ति व्याधिता वा भवन्ति बलहीना पुत्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत् तदा। तत्कार्याणि च सिद्धयन्ति यथा शङ्करभाषितं श्मशानाङ्गप्रमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा टल्लिखे लोहशिलाकया भूमौ शत्रुन् हीनरूपानुत्तरा शिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तुं स्वयं पठेत्। शत्रोः प्राणप्रतिष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छयमक्षयं ज्वलतङ्गतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं पुंशिनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम्। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपुत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले प्रयत्नतः सायङ्काले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। शत्रुच्चाटनं याति देशाच्च विच्युतो भवेत् पश्चात् किङ्करमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरं देवी सर्वसम्पत्प्रदे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्।
कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। पार्वती उवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो प्रब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशस्य दात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यं मातुलं लभेत्येन हि तद्वद। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्या सर्वकामप्रसादकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणम् उत्तमं शत्रुसङ्घाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिंश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। ॐ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवऋषि अनुष्टप छन्द श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थ जपे विनियोगः। ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालिघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदा च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं क्षौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन विदारये। श्रीह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचिनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्रि च चामुण्डा खादन्तु मम विधिवशः सुरेश्वरी
घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंडमालावृतांगी च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरे अनावृतस्तनी। मम शत्रुन् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्दी भिन्दी छिन्दी छिन्दी उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीये शत्रुन् समर्पयामि स्वाहा। ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मदं मदं मोहय मोहय हर हर मम रिपुन् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छं क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षौं क्षः स्वाहा। तत्कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः। वैरिणी प्रलयं यान्ति व्याधिता वा भवन्ति बलहीना पुत्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत् तदा। तत्कार्याणि च सिद्धयन्ति यथा शङ्करभाषितं श्मशानाङ्गप्रमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशिलाकया भूमौ शत्रुन् हीनरूपानुत्तरा शिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तुं स्वयं पठेत्। शत्रोः प्राणप्रतिष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छयमक्षयं ज्वलतङ्गतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं प्रोञ्छिनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम्। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपुत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले प्रयत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। शत्रुच्चाटनं याति देशाच्च विच्युतो भवेत् पश्चात् किङ्करमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरं देवी सर्वसम्पत्प्रदे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्।
कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। पार्वती उवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो प्रब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद् यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशस्य दात्मनो रक्षणं भवेत् परमैश्वर्यं मातुलं लभेत् येन हि तद्वद। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्या सर्वकामप्रसादकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणम् उत्तमं शत्रुसङ्घाक्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिंश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। ॐ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टप छन्द श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थ जपे विनियोगः। ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालिघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदा च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ॐ कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं क्षौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रुन् विदारयेत्। श्रीह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचिनी ह्रूं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्रि च चामुण्डा खादन्तु मम विधिवशः सुरेश्वरी
घोर रूपा चण्डमुण्ड विनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गी च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरे अनावृतस्तनी। मम शत्रुन् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्दी भिन्दी छिन्दी छिन्दी उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीये शत्रुन् समर्पयामि स्वाहा। ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मदं मदं मोहय मोहय हर हर मम रिपुन् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं नेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छं क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षौं क्षः स्वाहा। तत्कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः। वैरिणी प्रलयं यान्ति व्याधिता वा भवन्ति बलहीना पुत्रहीना शत्रुवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत् तदा। तत्कार्याणि च सिद्धयन्ति यथा शङ्करभाषितं श्मशानाङ्गप्रमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशिलाकया भूमौ शत्रुन् हीनरूपानुत्तरा शिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तुं स्वयं पठेत्। शत्रोः प्राणप्रतिष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छयमक्षयं ज्वलतङ्गतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं पुंशिनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम्। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपुत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले प्रयत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। शत्रुच्चाटनं याति देशाच्च विच्युतो भवेत् पश्चात् किङ्करमाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरं देवी सर्वसम्पत्प्रदे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्।